Hello students, in today's lecture we will be dealing the concept length of the tangent or the number of tangent we can draw to a circle from a point. Let's see how many tangents we can draw if from a point, if that point is in the interior of the circle or if it is on the circle or if it is in the exterior of circle. First case में how many tangent we can draw? Let's draw the line through it. If the point is in the interior of the circle, all these are secants. क्या है सभी? Secants. We can not draw any tangent from a point which is given inside the circle. Now, let's come to another point. If the point lies on the circle, we can draw only one tangent. We can draw only one tangent if the point lies on the circle. And the third point is if that point lies in the exterior, this is the circle and this point lies in the exterior, how many tangents we can draw from here? Let this is 1 and this is 2. We can draw 2 tangents from an external point to the circle. Okay. Now इसमें एक theorem आती है. If we draw a tangent to the circle from any external point, then length of the tangents is equal. दोनों की जो length होगी tangents की equal होगी. ठीक है? Now let's prove it that the length of the tangent drawn from any external point are equal. We have to prove this theorem, and this theorem is the second theorem of this chapter, and these two theorems are very, very important, and this is the second one which we are discussing. It is theorem: the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. Let this is the point P, and these are the Q and R, and this is the center of the circle. PQ and P are the two tangents. We have to prove that PQ is equal to PR. हमें prove करना है. ठीक है? Now given PQ and PR are two tangents to the circle with center O. O is the center. Okay. Now, to prove, we have to prove that PQ is equal to PR. We have written PQ and PR are tangents. We have to prove that PQ is equal to PR. For this one, we have to we have to draw construction join OQ, OR and OP. ठीक है? Join OP, OQ and OR. Join OP, OQ and OR. Now, what we know? If we prove triangle POQ is congruent to triangle POR. If these two triangles are congruent, then we can say that PQ is equal to PR. Okay. अब हमें proof. Now, what we know? How we will prove these two triangles congruent? Now, the angle between radius and the tangent at the point of contact is 90 degree. This is tangent, this is radius, and at the point of contact, this angle is 90 degree. And OQ is equal to OR. These are the radii of this
इस सर्कल के दोनों क्या है, रेडियाई है। एंड OP इज कॉमन इन दीज टू, इन बोथ दीज ट्रायंगल्स। तो क्या कहेंगे आप, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, right angle hypotenuse and side. So we will prove these two triangles congruent by right RHS. After this proving them the right congruent triangles, we will say that PQ is equal to PR by CP. Now let's write it. Now, in triangle POQ and triangle POR, POQ and POR. Now this angle PQO is equal to angle PRO. Angle PRO is equal to 90 degrees. You will write the reason also, that angle between radius and tangent. Angles between radii and tangents. ओके, रेडियाई और टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होंगे वो सारे क्या होंगे, 90. नेक्स्ट इज OQ is equal to OR. OQ is equal to OR. Reason is these are the radii of a circle. जो सर्कल है उसके रेडियाई है, therefore all the radii will be equal and OP is common. OP is common, therefore these two triangles are congruent by RH, right angle hypotenuse, side, right angle hypotenuse, side. Therefore triangle POQ is congruent to triangle POR by RHS. ओके, अब हमें बताना क्या है, PQ is equal to PR. Therefore PQ is equal to PR by CP, corresponding part of congruent triangles. By CP you can say that PQ is equal to PR. Hence is it clear? अब इसके साथ साथ हम एक दो पॉइंट और हम कर लेते हैं. Here this theorem is over. इसमें एक दो पॉइंट और आते हैं, तो उसमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इस तरह के भी आ सकते हैं पेपर में कि prove that the line joining from the external point to the center divide the angle made from the point of contact to the center. कि ये और ये एंगल इक्वल है, जो ये कांटेक्ट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे जो एंगल बनता है, इसको जो लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर ये बाइसेक्ट करते हैं. अभी देखिए, आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया सेम वे, फिर कहेंगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बाय CP. हेंस OP डिवाइड एंगल QO. सिमिलरली जो एक्सटर्नल पॉइंट पे द एंगल between the tangents is also bisected by the line joining that point to the center. यानी कि ये जो लाइन है OP इस एंगल को ही बाइसेक्ट करती है. सेम वे आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ट्रायंगल्स को, और देन यू विल से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन बाय CP. तो इसके साथ साथ ये और ये भी क्वेश्चन आपको प्रूव करने पूछे जा सकते हैं. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे उनको सॉल्व करना. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. Let's see the exercise questions. First one, from a point Q, the length of the tangent to the circle is 24 centimeter. Length of the tangent is 24, and the distance of Q from the center is 25 centimeter. Center से जो distance है वो 25 kilometer. Then the radius of the circle is. ये देखिए MCQ type है 7 centimeter, 12, 15 और 24.5. First of all, draw the diagram. This is the circle. Length of the tangent is 24. This is from Q. This is P, and this is center. Length of the tangent is 24 centimeter, and the distance of Q from the center. Center से
जो Q का डिस्टेंस है, this is 25 centimeter. You have to find the radius. Radius is R. The MCQ type question is this is 90 angle between radius and tangent is 90 degree. Then apply Pythagoras theorem. तो क्या कहेंगे आप? R square plus 24 square is equal to 25 का square. तो R square थोड़ा इसको स्प्लिटली करेंगे, MCQ टाइप है, तो 24 का स्क्वायर, ये 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 and this is 49. R square is equal to 49, then R is equal to 7. So radius is 7. A is the correct answer. Okay. Now let's proceed to the second. If TP and TQ are the two tangents, TP and TQ are two tangents to the circle with center O, so that angle POQ is 110. POQ, this angle is 110. Then you have to find angle PTQ. PTQ, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए भाई, OPTQ is a quadrilateral. OPTQ is a quadrilateral. This angle is 110. Angle between radius and tangent, ये भी कितना होगा? 90. And this one is also 90. अब देखिए भाई, इन सभी चारों एंगल का सम कितना होगा? 360. ये दो 90 90 180, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 होगा। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं। एक और चीज आ गई आपके पास में कि भाई फ्रॉम एनी पॉइंट एक्सटीरियर टू द सर्कल, द एंगल बिटवीन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट्स प्लस this angle at the center from the point of contact, these are supplementary angles. दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि ये 90 ये 90 180 और इन दोनों का सम भी 180, तो ये कितना आ गया भाई? 70 डिग्री। तो this is and B is the correct answer. Okay. Now come to the third part. If the tangent P and PB from a point P to the circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degrees, means angle of inclination of the two tangents from point P. Let this is the circle and this angle of inclination. Angle of inclination is 80 degree. This angle is 80 degree. This is P A and PA and this is B. P and PB are the tangents. They are inclined to each other at angle 80 degree with the center O. O is the center of the circle. Okay. You have to find angle POA. Angle POA. अब ये आपको एंगल बताना है, ठीक है? This angle you have to find out. अब इस पे हम MCQ टाइप क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा फटाफट करेंगे। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एंगल कितना दे रखा है? 80. दिस इज 80. अब इसका और इसका सम कितना होगा? पहले वाले क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये 90 ये 90 दोनों का सम 180। तो इस क्वाड्रिलेटरल में सभी का चारों एंगल्स का सम 360 होता है। टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, तो रिमेनिंग टू सम विल बी 180। तो ये कितना हो गया? ये 80 है, तो ये वाला कितना हो गया भाई? दिस वन इज 100। अब क्या करें? अब ये 100 है, हमें तो ये फाइंड आउट करना है भाई। अब क्या करें? ट्रायंगल POA और ट्रायंगल POB को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कैसे प्रूव करेंगे? ये 90 ये 90, ये और ये इक्वल रेडियाई है और ये हाइपोटेन्यूज क्या है? कॉमन है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइन, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होंगे? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ये पूरा कितना है? दिस फुल एंगल इज 100, तो ये वाला POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। वेयर इज इट? तो एंगल ये एंगल POA इज 50, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now let's see fourth question. Prove that the tangents drawn at the end point at the ends of a diameter of a circle are parallel. Let this is
This is a circle and this is diameter, and this one is center. This point is A and this point is B. We have to prove that the tangents drawn at the end points of the diameter of a diameter, like this is AB is the diameter and this PQ and RS. PQ and RS are the tangents at the end point of a diameter. We have to prove that PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS. First of all, write what is given. PQ and RS are tangents at the end points of a diameter, end points of a diameter. We have to prove that PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये. अब what we know, this OA is radius, or this is diameter. You can say AB is the diameter. You know that this angle is 90 degree. Why this angle is 90? Because angle between radius and tangent at the point of contact is always 90 degree, perpendicular होते हैं. Similarly, OB is radius and this is tangent. तो radius और tangent के बीच में ये angle भी कितना होगा? 90. These are two lines. This is a transversal line. This angle, these are alternate interior angle. If alternate interior angles are equal, अपने पास अगर कोई भी दो लाइनें हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. These are alternate interior angle. If these are equal, then you will say that these lines are parallel. तो ये और ये alternate interior angle दोनों equal है, तो then these two lines are parallel, means tangents are parallel. Okay. So first of all, write angle OAP. Angle OAP is equal to 90, and angle OBS is also 90. Reason, angle between radius and angles between radius and tangents. रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में ये एंगल, ये रेडियस और ये टेंजेंट, ये रेडियस और ये टेंजेंट्स के बीच में है, तो ये 90 डिग्री. एंड दीज आर एंगल OAP and OBS. These are alternate interior angles. These are alternate interior angles. अगर alternate interior ये equal है और ये alternate interior angle है, therefore PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS because alternate interior angles are equal. Okay. Now come to the fifth question. Prove that the perpendicular at the point of contact to a circle, contact to the tangent to the circle passes through the center. आपको ये प्रूव करना है. Let this is the circle and O is the center. Prove that perpendicular at the point of contact with tangent. Let this is tangent. थोड़ा center को use this. Okay. This is tangent and perpendicular at the point of contact. यहाँ पे आप perpendicular ड्रॉ कीजिए. Let this is A, B, and this is P, Q. PQ is the tangent
at the point of contact A and this AB is perpendicular to QA. आपको ये प्रूव करना जो AB है जो perpendicular which is perpendicular to the tangent always passes through, यानी कि AB यहाँ से नहीं ये सेंटर से पास होगी, आपको ये प्रूव करना है. This point is given है AB is perpendicular to PQ. AB जो है PQ के perpendicular है of circle with center. सर्कल का सेंटर क्या है? हमें ये प्रूव करना है भाई जो ये परपेंडिकुलर है यानी कि जो ये एंगल 90 है ये कहां से पास होता है? AB. हमने ऐसे ही आर्बिट्रेरी लाइन बनाई है कि जो ये AB है जो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर एट पॉइंट A इट पासेस थ्रू द सेंटर. इट पासेस थ्रू सेंटर. हमें ये बताना है. क्या प्रूव करना आपको? perpendicular AB passes through center O से पास होती है. प्रूफ. ठीक है, ये इस O से पास होती है. आप इसको ज्वाइन कीजिए. ज्वाइन O. Okay, now what we know, OA is radius. तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? एंगल OAP is equal to 90 डिग्री. क्यों भाई? क्योंकि O is radius and this is tangent, तो एंगल between radius and tangent. ठीक है, रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में एंगल 90 का. एंड व्हाट इज गिवन? AB is perpendicular to PQ means angle BAP is also equal to 90. Reason? AB is perpendicular to PQ. This is given. AB is perpendicular. अब देखिए हमने क्या कहा? OAP is 90 and BAP is also 90. क्या भाई अगर मान लो OA और AB अगर अलग अलग लाइनें हैं क्या ये दोनों 90 का एंगल बना सकते हैं? दैट इज नॉट पॉसिबल. तो क्या लिखेंगे? एंगल OAP एंड एंगल BAP दोनों 90 है तो लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन it is only possible when O lies on AB. O lies on AB. Hence prove that perpendicular at the point of contact passes through the center of circle. ठीक है भाई, जो ये perpendicular है at the point of contact to the tangent, it passes through the center. में जो ये लाइन है, ये जो लाइन है AB है, it actually passes through the center. कहाँ से पास करती है ये? It passes through center. ये अलग अलग लाइनें नहीं है, it is the same line. Is it clear? Let's see. Sixth question. The length of the tangent from point A at a distance 5 cm from the center. Center से point है 5 cm. And from this point, length of the tangent to the circle is 4 cm. Length of the tangent is 4 cm from a point A, which is 5 cm from the center. Okay.
we have to find the radius of the circle. We have to find radius of circle. We have to find r. That this point is given. क्या क्या है? OA is 5 centimeter. AP is equal to 4 centimeter. We have to find, let radius equal to r centimeter. Radius is r centimeter. Now, what we know? We know that the angle between radius and tangent, this is always 90 degree. So, angle OPA is equal to 90 degree. Angle between radius and tangent. Angle between radius and tangent. Is it clear? Now, what we'll say in right triangle OPA. In right triangle OPA. Right triangle OPA. OP square plus AP square is equal to OA square by Pythagoras. By Pythagoras theorem we can say. Now what is OP? OP is r square plus में AP is 4 square is equal to 5 का square. R square plus में 16 is equal to 25. Take 16 to other side. R square is equal to 25 minus 16. So r square is equal to 9. Taking square root on both sides. So r is equal to 3 centimeter. Radius is equal to 3 centimeter. This is our answer. देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया, ये प्लस माइनस आना था, but we didn't take minus sign because length is always taken in positive. तो हमने सीधा इसको radius taking square root और हमने positive square root ले लिया इसका. R is equal to 3. So radius of this circle is 3 centimeter. Okay. Now let's come to the next 7th question. And what is it? It is two concentric circles of radii 5 cm and 3. Concentric circles means two circles which have same center and their radii are 5 cm and 3 cm. We have to find the length of the chord of the larger circle. We have to find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. जो larger circle के लिए तो chord हो, but this chord touches the smaller circle. Touch करती है smaller circle, let it touch at point. We have to find the length of this chord. We have to find length of A. इसके लिए क्या करें? Join OP OA. Now, what is OA? OA is the radius of the largest circle and it is 5 cm. It is 5 centimeters. What is OP? OP is the radius of the smaller circle. This is 3 centimeters. And what is this angle? This angle is 90 because this AB is the tangent to the smaller circle. Because smaller circle को एक ही पॉइंट पे ये टच करती है, तो ये स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो गया? टेंजेंट हो गया. अगर ये टेंजेंट है तो ये OP क्या होगी? परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि एंगल यहाँ पे 90 बनेगा. ठीक है, ये एंगल 90 बनेगा. तो ये क्या बन गया? OAP. OAP क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. हाइपोटेन्यूज लो, वन साइड इज गिवन. We have to find AP. We have to find AP. We can find AP by this one. अब दूसरा AP हमने फाइंड आउट कर लिया and AP is equal to PB. AP is equal to PB. अब ये थ्योरम है भाई, 9th क्लास में आप कर चुके हैं. If this is a chord and you draw perpendicular from the center. 9th क्लास में थ्योरम थी perpendicular from the center bisect the chord. जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो chord को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. It means AP is equal to PB. ये फिर थ्योरम आप
लास्ट ईयर आप कर चुके हैं। तो इट मींस आपने ये प्रूव कर दिया कि OP क्या है, इज परपेंडिकुलर टू AB। ये 90 का एंगल आपने प्रूव कर दिया बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ये 90 का हो गया। 90 का हो गया तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AP देन P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और फिर जो आपने ये फाइंड आउट किया AB के लिए क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। एनी डाउट? सॉल्यूशन रेडियाई आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट ऑफ लेट दिस इज नाउ OP, what is you will say AB is tangent to smaller circle। AB क्या है, this AB is tangent इसके लिए छोटे सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है। therefore OP is perpendicular to AB। therefore OP is perpendicular to AB। आपने बता दिया टेंजेंट है, टेंजेंट बताते ही आपने कह दिया OP is perpendicular to AB। और जैसे ही आपने OP परपेंडिकुलर बता दिया तो सीधा कह देंगे OP bisect AB। therefore OP bisect AB। OP bisect AB रीजन देंगे आप, रीजन क्या देंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। तो अभी हम सबसे पहले इसमें आते हैं राइट ट्रायंगल OAP। इन राइट ट्रायंगल OAP तो क्या होगा, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर बाय पाइथागोरस। तो लिख लेंगे हम इसको, है। नाउ व्हाट इज यू हैव टू फाइंड AP स्क्वायर प्लस में व्हाट इज OP 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू टेक 3 स्क्वायर 9, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू 16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो AP इज इक्वल टू 4। प्लस माइनस 4 होता है, लेंथ इज ऑलवेज टेकन इन पॉजिटिव, देयरफॉर यू विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू। तो AP दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज P इज द मिड पॉइंट यू हैव टू OP bisect AB आपने बता दिया कि P मिड पॉइंट है AB का, तो आपने AP फाइंड आउट कर लिया। व्हाट इज AP? AP इज डबल ऑफ, व्हाट इज AB क्या होगा, AP इज डबल ऑफ AP। प्रूव्ड अर्लियर, ये प्रूव कर चुके हो पहले कि भाई P मिड पॉइंट है। ओके, तो दिस इज 2 into 4 that is equal to 8 सेंटीमीटर। तो AB is equal to 8 सेंटीमीटर। यही आपको बताना था कि AB की लेंथ कितनी है, it is 8 सेंटीमीटर। Is it clear? Now it's okay for today's lecture. We will take up the remaining portion of this exercise